also thankful because my program, my schedule changed, and you still made all the adjustments to make sure that I'm there. And it's certainly an honor. Congratulations, for this achievement, for this beautiful day, and certainly an honor because it's happening on the day we all admire, celebrate, respect, and imagine a day starting with the bhajan, okay, Vaishnav Jante, and then Sartham Prarthana. I think it's just a beautiful beginning. तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इतने सम्मान के लिए, सब कुछ बोलने के लिए, इवन ये भी बोलने के लिए कि हम गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं. That itself is such a big honor, to be accepted, to be recognized. तो मैं 3-4 बातें बोलूँगा, मतलब अपनी जर्नी को लेके, and maybe more importantly about what has been the learning, because it's been 25 years of this work, and I come from a very absolutely a hardcore family of engineers, and also a family which wanted to make sure, which was making sure that everyone in the family really studies well, despite a whole lot of issues. मतलब उस टाइम में इतने finances available नहीं होते थे, और मैं तो बहुत बार ये सोचता हूँ कि if I'm here, if I'm in a position to talk in more than one language, outside the country, and still able to talk to all of you, it's a huge amount of sacrifice of that generation who never thought of buying a car but investing more money in the education of all of us. और मैं बहुत blessed मानता हूँ अपने को कि आपको लाइफ में एक पर्पस मिल जाता है, आपका एक ड्रीम होता है जो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है. वो ड्रीम शायद पूरा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऐसे लोगों के ड्रीम बहुत बड़े होते चले जाते हैं, शायद पूरा नहीं होगा, बट आई एम स्टिल ब्लेस्ड कि वो ड्रीम एक सही डायरेक्शन में है, और कुछ जो भी हम लोग अपनी जिंदगी में कर सकते हैं थोड़ा बहुत भी जस्ट ट्राइंग टू डू. तो मैं आई स्पीक अबाउट 3-4 थिंग्स although lot is covered in the profile and in a small video, but still first thing which I realized in the last 25 years that there are issues and there are non-issues. और ये सभी जो वहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं खास तौर पे, उन लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि वो हमारे लिए भी था और हम अभी भी सीख रहे हैं. तो जो मैं कहता हूँ कि इश्यूज हैं, तो फाइन, वाटर, एजुकेशन, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, and then there are a lot of things which we don't see somehow and which we ignore. So when I studied mass communication, I'm a product of Indian Institute of Mass Communication. वो IMC से थोड़ा confused हो जाते हैं, but I'm a product of Indian Institute of Mass Communication. वहाँ से जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग भी किया था, और मैं देहरादून से आया था. और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, अब तो देहरादून छोटा शहर नहीं है, पर उस समय था. I'm talking about 1990 and 91. It was a small city. और मेरा सबसे पहला ये था कि मैंने देखा कि किस तरीके से लाइफ में मायने बदलते हैं. तो फुटपाथ छोटे शहरों में उस जमाने में चलने के लिए होता था, जहाँ भी होता था. And when you come to the big cities, Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, wherever, that time I entered Delhi, and suddenly you see that footpath is all about life. मतलब फुटपाथ एक ऐसी जगह है जहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों का खाना बनता है, लोग नहाते हैं, लोग रहते हैं, लोग फुटपाथ से काम पे जाते हैं, फुटपाथ पे लौट आते हैं. So this was something different for me. उस जमाने में देहरादून में रेड लाइट्स नहीं होती थी, बट छोटे शहरों में जहाँ भी रेड लाइट होती थी, हमारा परसेप्शन, हमारा मानना ये था कि वो ट्रैफिक के लिए होती है. और फिर आप बड़े शहरों में आते तो फिर आपको रेड लाइट के चारों ओर जिंदगी दिखती थी. People used to beg, people used to sell, people used to, there was a rhythm in that life. तो मेरा ये था कि मुझे थोड़ा जर्नलिज्म का कीड़ा था, और मेरे लिए जो बहुत अच्छी स्टोरीज होती थी जो यूज्ड टू बी इन ओल्ड दिल्ली, और ओल्ड दिल्ली में 2 वजह से जाता था. बहुत साफ शब्दों में कहूँ तो एक तो इन सच गुड स्टोरीज एंड यू यूज्ड टू सी लाइफ वेरी क्लोजली, और दूसरा वहाँ पे जो फुटपाथ का, जो बाजार का जो चाट पकौड़ी वाला खाना होता है, वो आई सुना आई थिंक आपने प्रोफाइल में कहा कि मैं फूडी हूँ, तो मैं उसके लिए जाया करता था. तो ऐसे ही एक बार घूमते हुए मुझे I just saw a रिक्शा,
or it was just a picture. Okay, fine. It was nothing special about it, but I thought it was a good picture. But because I didn't have a zoom lens, I had no option but to go next to the subject. And the moment I go next to the subject, I find written in Hindi, which says "Police Seva Lavaris Lash Uthane Wala." So suddenly a picture became a story, and then I followed that family, Habib Bhai and his wife Amna. I followed that family. और वो एक delegate पे जाके रुके, वहाँ पे there was a dead body lying. They picked up the dead body, which I found very strange. And I said, okay, this is how it operates. And then I kept following them for 7 to pick up unclaimed abandoned dead bodies of the people जो homeless थे या जो whether it's a murder, it's a suicide, it's a accidental death, it's a general death, it's a death due to lack of something. That was the case. And for every dead body, he was paid 20 rupees and 2 meter of white cloth. तो मेरे लिए बड़ा अजीब था कि मतलब ऐसा भी कोई प्रोफेशन होता है क्या? But that was the reality. तो जब मैं उनसे बात करने लगा for writing the story, तो 2 चीजें निकली. आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बट क्योंकि डॉक्टर चतुर्वेदी ने रेफर किया है तो मैं I'm just repeating the story. अभी मैंने कहा कि सब जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है और कभी-कभी इतना काम होता है कि मुझसे संभलता नहीं. And then I realized that every 24 hours, Habib Bhai was actually picking up 10 to 12 dead bodies, and in these summers it used to be 4 to 5. So the general thing, we all think that people are dying because of cold, but then I realized no. I mean, if the cold kills people, even I would have died. And that's why I titled it non-issue, so that you can relate a lot of things with this. So that means cold is not killing people. That means lack of clothing is killing. तो आप 3 बेसिक नीड्स तो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, बट कपड़े पे काम नहीं होता. कपड़ा एक डिजास्टर रिलीफ मटेरियल है. यू नीड अ फ्लड टू बी फ्लडेड विद क्लोथ्स. और कपड़ा एक चैरिटेबल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है. इफ यू डोंट नीड इट, यू कॉल इट अ डोनेशन. हमने उस पर भी ऑब्जेक्ट किया. हमने कहा कि एनीथिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी यूज्ड, हाउ डू यू कॉल इट अ डोनेशन? इट्स अल्टीमेटली डिस्कार्ड एंड रादर वी नीड टू बी थैंकफुल टू द पीपल हु आर यूजिंग इट. बट वो एक रियलाइजेशन था कपड़े को लेके और सामान को लेके. उनकी एक छोटी सी बेटी थी, 5-6 साल की बच्ची थी, बानो, who gave the most shocking statement by saying कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ. ये सिर्फ लाश तंग नहीं करती, लाश का मट नहीं करती. As a journalist, you become used to these shocking things, but it was so shocking, and also it was somewhere breaking your notions because you were told, you were taught that dead bodies are cold, and this girl is saying something different, and maybe because you don't understand the compulsion, you don't understand the relative poverty, and all those very new words, which are still new word to me. That's why I was not able to understand. I did a story, but it kept bothering me. And that's where years later, after leaving my job, I met actually my wife and I didn't see that time. So one was earning, the other one was spending, I was spending in that time. That's where this journey started of Goonj. And we realized that there are large number of non-issues. Clothing is one of those non-issues. Second, हमें lesson था, हमें लगा कि not only non-issues, the other thing is dignity matters. Right? तो और dignity, आज बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि Goonj gives dignity to people, और हम हमेशा object करते हैं. हम कहते हैं नहीं, no one can give dignity to anyone. Right? Dignity is something with which all of us are born. Whatever caste, community, shape, size, geography, economy you're born with dignity. Dignity is a part of our soul. Society can only do 2 things. Either it can respect dignity, or it can snatch dignity. It can challenge dignity. तो और हमें लगा dignity तो बहुत important चीज है. हमने से बहुत सारे लोगों से जब हमारे पूछा जाता है कि आपके पास क्या क्या एसेट हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो we write house, car, mobile, whatever we can write. हमें लगता है कि वो फाइनेंशियल वीकर सेक्शन है, उसके पास क्या होता है? उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट, उसका एसेट इज देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, इज देयर डिग्निटी, राइट? एंड वी फील, and maybe once many of you go deeper in it, you might agree with it, that charity takes away dignity of people. Instant charity is okay, fine, but sustained charity takes away dignity of people, and without dignity is not life, is no development. मुझे लगता है मुझे पढ़ना है, अब I really have to read that.
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोइंसिडेंटली ऐसी हो रही हैं जिस पे लोग कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो हम भी आखिरी इंसान की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आखिरी इंसान के पास बहुत ताकत है, बहुत दिमाग है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में इसके किसान बनाते हैं, और जो किसान 8 से 10,000 किस्म के चावल खोज के लाए हैं, the farmers who innovated would come out with 8,000, 10,000 different variety of rice, but we still call farming an unskilled profession. और मेरे जैसे लोग जो गूगल पे जाके 15 मिनट का एग्रीकल्चर का लेक्चर तैयार कर सकते हैं, हम लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, हमको चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। बट वो जिसकी विजडम है, जिसकी इनोवेशन है, उसको हम 10 किलो कोविड के टाइम में चावल देके बेनिफिशियरी बोल देते हैं, जो जिंदगी भर हमारा पेट भर रहा है। यदि कोविड के समय में हम जिंदा रहे तो हम सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से जिंदा नहीं रहे, हम सिर्फ आपस में केयर की वजह से जिंदा नहीं रहे, हम उस किसान की वजह से जिंदा थे जो दिन रात खेतों में लगा रहता है, उसको उसकी कीमत नहीं होती जो वो उगाता है। आप कभी कैलकुलेशन कीजिएगा कि द डे वी स्टार्ट पेइंग मिनिमम वेजेस टू द फार्मर्स इन दिस कंट्री, हम में कोई भी इंसान चावल टच नहीं कर पाएगा, गेहूं टच नहीं कर पाएगा। तो यकीन मानिए हम पे बहुत सारे लोगों का कर्जा है, और इनकी वजह से हम यहाँ जिंदा हैं। और एक और आखिरी बात, मैं I will not talk about the model of Goonj and all that, because if you're really keen you can always go up on the Google and find it. मैं सोचता हूँ कि हम आप जो भी लोग आज सुन रहे हैं इस हॉल में बैठे हुए हैं, या जो भी लोग इस पूरे करिकुलम से जुड़े हैं, कोर्स से जुड़े हैं, the people who are able to come to this campus, right, in whatever capacity, the people who will become the decision maker in this country for all these schemes, for everything, whether you are a part of private sector, government sector, whatever. Please remember one thing, and that is my personal story. मैं जब 98 में when I was leaving Scots, मैंने एक बहुत छोटा सा कैलकुलेशन किया था, and the calculation was that I paid a few thousand rupees as fees there, and then I asked myself that ideally this fees in those days also should have been at least 50,000 rupees, 1 lakh rupees, because the kind of facility, faculty, campus, everything we had. And then I asked myself that if this fees was even 30,000 rupees, 40,000 rupees, was it possible for my parents to pay? And in 98, the answer I got, maybe they would have done it because they were crazy about education, but it would have been very complicated, very tough, or maybe it was impossible for them to pay. The day of 1998, when I was leaving my job, that day I remember because that day I realized I am the biggest product of subsidy of this country. And please remember, subsidy is never given by the governments or the rich people. जब आपका पूरी दुनिया भूख में थी, बीमारी में थी, उसी समय में हम लोगों ने स्पेस टूरिज्म इनोवेट किया था। तो ध्यान रखिएगा कि subsidy never comes, some good people do, but mostly it doesn't. It comes from the people who are walking on the roads in 2020. The labor who makes our house and factories and lay internet lines and everything, and the farmer. ये वो लोग हैं जिनकी सब्सिडी होती है। तो यकीन मानिए, प्लीज आज जाके इस पर बात कीजिएगा, सोचिएगा that every single person who has ever gone to a government school, government college, IIT, IIM, BIMTECH, any government, any private institution, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी बहुत सब्सिडाइज रेट में लैंड दिया जाता है, सो दैट द एजुकेशन रिमेन्स अफोर्डेबल, एंड दैट्स हाउ इट इज अफोर्डेबल इन मेनी केसेस. So all of us have eaten up the subsidy of this country. Whether we should get subsidy or not, it's a larger debate. We can talk about it later. But मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत privileged हैं that we are in a position or we will be in a position to pay back. बहुत सारे लोग अभी भी उस हाल में रहते हैं जो नहीं पे कर पाते। तो मैं बस जब आप यहाँ से कभी निकलेंगे या जो भी आप या रहते भी हैं, जब आप वहाँ या आने वाली पीढ़ियाँ जो उस इंस्टीट्यूशन में है या आपके रिश्तों में, दोस्तों में है,
ध्यान रखिएगा कि ये हम लोग जो भी हैं वो सब्सिडी की वजह से हैं और उस पर हमारा हक हो सकता है और यहाँ उसे कर्जे की तरह रख सकते हैं। ऑलवेज टेक इट एज दैट। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट गिविंग बैक, इट्स अबाउट पेइंग बैक। और मजा तभी है जब हम यदि अच्छे 3 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने लगे तो हमारे बालियों में भी बस्तियां गंदी न रहें, सड़कों पे लोग चैन से चल सकें और कोई लड़की इस देश में सड़क पे चलते हुए यदि ईयर प्लग लगाती है कान पे कुछ भी, तो ये मत सोचिएगा कि उसको म्यूजिक का बहुत शौक है। वो शायद इसलिए लगाती है कि उसको कुछ उल्टा पुल्टा नहीं सुनना। और ये सारी चीजें हम लोगों के हाथ में है टू लिव अ गुड लाइफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर studying here. Parents have been struggling to make sure that we get the best possible education. So it's important कि जो पूरा नेशन बिल्डिंग का काम है सच्चाई से और ईमानदारी से इसमें हम सब लोग साथ में करें। ये किसी सोशल सेक्टर के लोगों को करना है या सरकार को करना है। सरकारें भी हम बनाते हैं, सोशल सेक्टर में भी हम ही हैं। और देश की 70% जनता के हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं होती। वो तो आजकल अपने खेत में भी डिसीजन नहीं ले पाता है। वो हम ही सब लोग हैं who can speak more than one language, who have been very privileged to get education in good institutions. We are the decision makers. We have to be careful and mindful कि हम ऐसा ना करें कि हम हर घर के आगे 1-2 फीट ऊंची सड़क बना दें और फिर उनमें रहने वाले लोगों को कहें कि अब आप लोलाएंगे एरिया में रहते हो। There can be better planning, there can be better execution. We can work with huge amount of honesty and जो आज अभी डॉक्टर चतुर्वेदी ने जो सारे प्रिंसिपल बोले हैं वो हाइपोथेटिकल नहीं है, वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है। टफ होते हैं क्योंकि उनमें शॉर्टकट नहीं होता, बट होता है। इट हैपेंस थ्रू दैट। एंड बिफोर आई एंड, बिकॉज ये पर्सनल जर्नी की बात है, मैं एक और छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। तो मेरा जब मैं when I was in 12th grade, तो I met with a massive accident in Delhi, and I remained in hospital for on bed for about a year and thrice in hospital. तो एक सर्जरी होनी थी और नॉर्मली उस टाइम में जब सर्जरी होती थी तो उससे पहले दिन अनफॉर्चुनेटली you were supposed to pay about 400 rupees as bride. तब कहीं जाके वो सर्जरी बाकी हो पाती थी, अनफॉर्चुनेट, बट दैट वाज द ट्रूथ। तो जब हमारे केस में आपका सर्जरी होनी है और नहीं पहुंचा पैसा, तो the guys were very furious. They asked my parents what happened, and I still remember I lost both of them. I lost my father and mother early, but I still remember the entire setup. When I was just in 12th grade. And my parents saying no, it's नहीं सब ये तो होता नहीं है। And यकीन मानिए मतलब जब मैं बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग इंडिया में देखता हूँ तो हम normally we don't say no to bride, we largely negotiate on that कि सब 400 नहीं 300 ले लीजिए 200 ले लीजिए on that. So they were very courageous people that said no. And I remember how the doctor really yelled and said कि ये बच्चा मर गया तो आप क्या करेंगे, लड़का मर गया तो आप क्या करेंगे। And then my parents being very upfront telling them कि फिर वो हमारी किस्मत है, right? I don't know how many parents have the courage to do that.